شو تبيات كوبافة تيركي ودي يو تبيات خراب ودي سنبا سارم كساكوني بيوندن فديك خيلا توني وزو يوندن وزم كباس ويز داغا خان اشتو غاترن درايان دي غافشي لاج وزبويزن بسابن زخجي تنامي جو تعرف جيل سنبامكي مال حالس بويرف وز تو هالدم خونر نيجي وزبويزن بسابن أما الحالة ليت أو بيدلن زازيت تشتين وزبويزن In the remote isolation of Shimshar, medical help means a treacherous 3-day-long journey, sometimes the difference between life and death. But little Naima's parents can no longer keep hoping for a miracle. They know she must be taken to a hospital as soon as possible. يعني شو يفوست يعني رايون با يوندن زمان نيجو تاكن قدام وفاندن مش خات بكيو علاج وقتي اي علاج ناس Pendir toki come pak chara netto padam kuiche men giltio kam jai padam yondenet was a pergadinishin. Since the under construction road connecting Shimshal with the Karakoram highway is partially through, Aga Khan and his brother think it may be possible to reach the nearest hospital in Gulmit within a day, provided a jeep picks them up from the road camp, which is almost halfway. Bibi Mama hopes that their message has reached the volunteers at the road camp. سهرني توكل كيف بس تايدين با volunteer scout يتش فومداد سارن تم نبغتنا نيكين ني سمرتيبي يا وغادي بديك سهرن سب بجابي ترون سهر نوريت
volunteers are already waiting for them at Cook. From here, they will carry the patient across the next stage at a much faster pace to the road camp, where a jeep is waiting to drive them to Gulnet. So far, Naima seems to be faring well. With a little more luck, she should be able to reach the hospital by nightfall. Before the road construction started, this journey would have taken up to 3 days, along a much more dangerous route. But due to the tireless efforts of the community, the jeep road connecting Chimshal with the Karakoram highway is nearing completion, and the curse of isolation will soon be lifted. Earth, wind, fire and water. The elements of nature have always posed the toughest challenges to the mountain people. But today, man's quest to harness these very elements has led him to discover their true potential. Up until recently, these mountain communities in the north of Pakistan were left far behind the rest of the world due to a lack of basic communications infrastructure. But today, motivated communities are going through a much-needed transformation. Driven by a common goal, the collective spirit of these people has helped them move mountains. Today, many remote villages like Chimshal are connected to the highway by jeepable roads and bridges. रास्ता अभी तो फिर भी बन गया है, पहले तो बहुत चढ़ाइयाँ थी, अभी तो एक भी नहीं चढ़ाइयाँ। शुरू जब होता था तो चढ़ाई इसलिए Chimshal तक चढ़ाई थी। तकरीबन 5-6 दिन हो रहे हम इधर आए हैं। अपनी मर्जी से आते हैं, जिसकी मर्जी, ये छोटे हों बड़े हों, सब आते हैं इधर काम करने। जीता दिन का काम है, पुल अभी जब तक नहीं बनेगा तो हम लोग इधर ही हैं। 1-2 दिन इधर जाएंगे, 1-2 दिन पुल पर गुजारेंगे ऐसे। 2 महीने में अगर ये पुल बन जाए तो हमारे Chimshal के जो ट्रैक्टर है वो क्रॉस करके नीचे या गर्म चश्मा से भी आगे जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो 3-4 पुल है उसमें टाइम लगेगा। इंशाल्लाह इस विंटर में पानी से वो क्रॉस करके गाड़ी थ्रो हो जाएगा। To evoke a sense of ownership, the communities are encouraged to identify the required projects themselves by sharing the cost and taking complete responsibility for the construction and maintenance of these projects. Communities are able to ensure efficiency
and transparency. Successful completion of the communications projects not only connects these communities to the rest of the world, but also brings the people closer together. The village organizations, which are formed to manage these projects, meet regularly, discussing further projects for the future. Women participate actively, as well as the village elders. At times, this sharing of ideas results in unique solutions to particular problems, like the Hush Chairlift project. Educating system, आवाम एजुकेट को कोई सिस्टम आवाम को तादाद आगे यानी ज़्यादा बावजूद नौ नस्ल निसाओ कोई करके सिस्टम शेयर आवाम को राबिता हमें राबिता Communication is not always the main problem for these areas. Buni has had metalled road access to the central market town Chitral since the early 1980s. The villages in the valley have grown closer together, and the cluster is now developing into a small town. Here, farmland is under pressure from both the increasing population as well as the mushrooming growth of buildings. To get the best possible value out of the available land, farmers here have been trained in model farming methods since 1984. बस गुजारा भी नहीं होता था। जितने हमारे फल फ्रूट है ये बेकार जाते थे, माल मवेशियाँ खाते थे, इनको फरोख्त की मार्केट नहीं थे, मार्केट को समझ नहीं थे। जब AKSP आए उन्होंने मार्केटिंग में हमें ट्रेनिंग दी और सारे कैश क्रॉप बना दिए हमने। कैश क्रॉप्स में जरदालू है, सब्जियात हैं, इसी तरह ताज़ा फल है जो नीचे गिरते हैं, इनको हमने जैम जेली बनाते हैं। कोई भी चीज़ फालतू ज़ाया नहीं करते, हर एक चीज़ को अच्छी तरह ड्राई करते हैं और ड्राई की काफ़ी कीमत भी होता है। इसी तरह मेरे शहद की मक्खियाँ हैं, 4-5 मन शहद निकालता हूँ। Apart from increasing the efficiency of the existing farms, more land needs to be developed in Buni to secure the future of the coming generations. The peaks above Buni remain snow-clad, ensuring an abundant supply of water all year round. At the foothills of the Donu range, there are vast pastures ready to be cultivated. An irrigation channel was planned in 1985 to claim the Shipashun pastures for farmland. Starting from close to the mouth of the glacial stream, some 17,000 feet above sea level, the site was only accessible for 3 months in a year. पहाड़ों का ये सिलसिला ऐसा था कि यहाँ कोई भी जा नहीं सकता। तो हम जब इंजीनियर को यहाँ लाया तो वो स्टेटली पर आके कह दिया कि भाई ये तो बस की बात नहीं है, ये नामुमकिन। फिर हमने इसको लेके उस साइड उस पहाड़ों के उस सिलसिले में जाके उसी सिलसिले से दूरबीन से हमने सर्वे कराया कि भाई कहाँ से हमने नहीं निकाले। यहाँ 9,500 फुट बुलंदी पर काम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 कंप्रेशर मशीन थे। सबसे प्रॉब्लम हमारे लिए ये था कि बुनी का कोई शख्स भी पहाड़ में काम करने की तजुर्बा नहीं है। चरण से हमने एक आदमी को ड्रिलर को, वो यहाँ आकर ड्रिल कर रहा था।
फिर हम अपने बंदों को सिखाने के साथ साथ काम भी करा रहे थे उनसे। फिर जब दूसरे साल आया तो गिनी के सारे लोग काम करने लगा और उनका तजुर्बा हुआ कि पहाड़ में किस तरह काम किया जाता है। फिर हमने हिम्मत से काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वक्तन फौक्तन हमें सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना होता था। कोई 20-25 गज ब्लास्ट के लिए ऊपर जाना, तो ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं था। उस रास्ते के लिए हमने सीढ़ियाँ लगाकर वहाँ जाके ऊपर जाके ब्लास्ट करते थे। इसी तरह करके जाके 10 साल 28,000 फीट हार्ड रॉक कंप्लीट हुआ है। ज्यादा लोग ये कहते थे भाई ये नामुमकिन काम है, कितने आदमी यहाँ मार जाएंगे, कितने आदमी यहाँ गिर जाएंगे, कितने जख्मी होंगे। मुश्किल तो कई आए, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने आकर कहा कि जी पहाड़ जो वो स्लिप हुआ। 40-50 जो बंदे काम कर रहे थे वहाँ पर एक पहाड़ की स्लिप के जद में आए। तो यहाँ से दौड़ लगा के पैदल के 2 घंटे का रास्ता हमने घंटे में तय करके वहाँ गया। तो 2 बंदे हमारे जो थे वो जिनकी डेथ हो चुकी थी, बाकी सब खैरियत से थे। इस दिन को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। बाकी छोटे मोटे तकलीफात आपस में हमारे खिलाफात आ जाते हैं, तो छोटी बातें होती हैं। महीने दूसरे महीने के जब बाद जाकर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या पहलवानदा तन है आबादियन होते दो ना 8 of the 14 village organizations in the Buni cluster have shares in the project. In the last 2 years, it has taken 3 failed attempts to finally reach an agreement between all parties on the mode of distribution. The long wait is at last over. Today, finally, the land will be handed over to its deserving and rightful owners. And the hopeful faces of these farmers say it all. Next, Muhammad Nizar. Nizar udah kagak nular. Bukan akan kia. Muhammad Nizar. Nizari को मन रहो। ताना में थे। 18 नादिर कुछ 18 हुई। ये गुलाब शो। बुलबुल नादिर। ये कोई क्या बोल Cutting through 28,000 feet of solid rock, it took 15 years to complete the 34,000-foot-long Shipashung channel. Still, the technical difficulties of the project were not as big a challenge as the social ones. Inga janjal पैदा हम हवाज़ों ज़रूर नहीं की हम शराद उससे लगा है हम लोग दिमाग हम लोग दिमाग दारू बचा के हाल जो क्या ज़मीन में पूरा हम हर बैंक बोकस मर रहा था इंसानियत और अंजलि हाल है क्या कोई कोई तास बेरिया तो इंसान क्या कोस बोल तो अभी कोई ना ट्राई चला शुतु प्रोग्राम से नो हम लोग दियो तो Having resolved the last petty issues, everyone is satisfied with the distribution. In all, 2,400 canals of new land have been equally distributed amongst 570 households.
Cezbatçı Nobeli. Ne orada soğuş korelik. Cagla korelik bilkul galat. Ayak kısmato korum kısmato. Koste can sahih zemin goy. Koste harap zemin goy. Mehnat korelik zaruri. Mehnat कर भाई जी जान हानि खुशान को खुशान न बोसें हाँ जो कमार कमाया 5 टके की बे 5 लाख रुपया शुमा माह का फायदा खुशान Apart from building channels, siphons and pumps for irrigation, a number of protective works have been built along the riverbeds. Since 1984, thousands of hectares of land has been developed for irrigation in the northern areas in Chitral, benefiting households in hundreds of villages. Some of them had none or very little land prior to the completion of these projects. An increase in the land holdings per household has had a significant impact on reducing poverty. Average livestock per household has increased by an increase in the growth of fodder. And expense on fuel wood has decreased as a result of farmers growing their own stock for an all-year-round, self-sufficient supply of fuel wood. Farmers have access to better seeds, which has improved the choice of crops and increased the yield. The available link to nearby markets has improved the scope for cash crop farming. Vegetables, especially potatoes, are now a popular cash crop. The newly discovered potential of these villages has not gone unnoticed in the nearby urban centers. In central towns like Gilgit, small industries have come up, working in partnership with the farmers. Especially the untapped produce of large quantities of fruit is now being channelized to extract better profits. हम लोग farmers को गांव में जाके उनके डोर स्टेप्स पे ट्रेनिंग देते हैं. हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से काफ़ी मुख्तलिफ है. एक इस लिहाज से कि हम इसको जो ट्राई करते हैं काफ़ी इम्प्रूव्ड ड्राइंग इक्विपमेंट से उसको यूज़ करते हैं. तो इसके अलावा गांव के अंदर हमने मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत दी है. तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बाद में हर गांव के अंदर या एटलीस्ट हर वैली के अंदर ऐसे ग्रुप्स पैदा होंगे जो कि इस बिजनेस को टेक ओवर करेंगे. तकरीबन 600 से ज़्यादा फार्मर्स को गिलगित और बल्तिस्तान में हमने ट्रेन किया हुआ है. और लास्ट ईयर तकरीबन हमने 27 टन के करीब जो है ना एप्रिकॉट प्रोसेस करके हमने एक्सपोर्ट किया है यूनाइटेड किंगडम में. और इस साल हमारा प्रोग्राम है तकरीबन 50 टन फार्मर से हम परचेस करेंगे. और इस नए फैक्ट्री में जहाँ पर तकरीबन 100 टन की कैपेसिटी है यहाँ पर हम प्रोसेस करेंगे. यहाँ का खुबानी के अलावा और भी बहुत से फ्रूट्स हैं जो बहुत ही पेरिशेबल. तो इस वजह से हमने ये सोचा कि इसको क्यों न फल बना के प्रिजर्व करके शेल्फ लाइफ दी जाए और इसको ज़ाया होने से हम बचाएं. मेरे पास पल्पर मशीन है एक ये बड़ी. तो इनको मैं ले जाके ये ड्रम्स को मैं ले जाके उसी बाग में ही उन जमींदारों से मैं वहीं के वहीं उधर से तोड़ते हैं लाते हैं. उनको मैं पाश्चराइज करके पल्पिंग बना के ड्रम्स में उसको प्रिजर्व करके मैं यहाँ ला के प्रोसेस यहाँ करता हूँ. यहाँ पर मैं जैम्स बनाता हूँ, कंसंट्रेट्स बनाता हूँ, जूसेस बनाता हूँ. This promising urban-rural partnership between the villages and their nearby cities is entirely dependent on the Karakoram highway. Since its inception in the 1970s,
the highway has been the primary agent of development in the entire region, and improved access to remote villages and valleys has extended the reach of this development. Water and Sanitation Extension Program has brought drinking water to the doorstep of thousands of households. And Building and Construction Improvement Program has introduced improved heating and insulation methods that can reduce the ill effects of smoke and increase the efficiency of fuel wood by up to 60%. All these factors combined has resulted in the average increase in per capita income by 80 to 100%. Bishal gute mimar projected yabanke kultum gun khashina han galguan tum insan shakalar badal bimanan yeter manmi akurun ma tasawurat inke gute labz bishki labzan blake to mi but intihai taklif lubam kultum gun kha akolar gan merklier apim kulto taip dishan badal bimanan ke bishal kum sangar dimeban or in kotuper ban mi senan kul kambela. Micro-hydro power generation is ideal for remote mountain regions. To keep it economically viable, AKRSP started by putting up small capacity units so that their maintenance would be affordable for the village organizations. Capable individuals from the communities are properly trained to run and maintain the plants. The 100 kVA micro-hydro unit in Yorjor started working in 1996 and has been well looked after by the local technician, Gul Ahmed. This extraordinary sense of ownership and commitment has been well rewarded. Making full use of the potential of the plant, the village organizations have managed to extend the maintenance fund considerably by selling connections to a village and some offices outside the cluster. Women's active involvement in the proper running and upkeep of the power plant reflects just how much they value the impact of electricity. These mountain women lead extremely tough lives. Their days are full of physically demanding and time-consuming chores. Although the capacity of the micro-hydro unit in Yorjor has limited uses, it has made a strong impact by creating more time in the late hours due to better illumination. Even more time can be saved from the tough daytime chores, some of which have been made easier and quicker with the help of electricity.
रोड सही हो, बिजली पता रोस्ट हो, अजेली चीज़ की तालीम सबक रहना, कोतांग का मशीन सुईरान गया गईरान दुमिरान की जगह, इको चीज़र भी वहाँ ते करो, मानो बयान रखिश भी तानवस्तन किया, मानो उदिन्यान शापिक कोन्यान, थे तान ते इबादत ते बिन्यान सफाई असर बिजली रोस्ट, बिजली अंतर तो फायदा हो कुछ रखिश बोलो उस हाँ से दूँगा जो जी वाले आप गई से अंजुनी से शू कौन का टेरेस कौन का कालीन कौन क्या दिखो उस पर जी अच्छा फायदा. With more time at hand, women can produce more thread, which is used in the weave of traditional fabrics like shoe and sharma, as well as carpets. These hand-loomed and hand-woven products have a reasonable demand in nearby markets and bring good profits. Yes, but इंतहाई हानि फायदे से कि हानि से इसका डोनेट किया होता है वाल बैंक है हमारे सदर का किया होता है पाहोरो सादी सरकार 5 मेगावाट बिजली को मशकी दो तैयारी आसान कि हमने जो बिजली पोजीशन ही वाद इस पर है कि बिजली हानि की ज्यादा बोई हानि इस पर दिलचस्पी है बिजली सुनती है. With the knowledge of what electricity can do, women are eager to expand its application to achieve further benefits. This newfound confidence in their abilities has been enhanced by their recent exposure to the rest of the world through television. Reducing the feeling of alienation, it provides them necessary entertainment and expands the horizon of their imagination. जस्ट पास कर इस पर तालीम व हासिल को कोनो बसे कॉलेज करने की वकिया ना कर दी कि मस्क से यहाँ तरह साना कंप्यूटर होता गया ना रे बच्चा कंप्यूटर इस पर क्या इसमें बसे बिजली इस पर हाश को क्या इम्तिहान दी कि दोस्त इस पर रिजल्ट पे किसी ने आता बहुत ध्यान देते गया The ripple effects of such interventions have been felt in other parts of the world also. The model of the micro hydropower generation introduced in northern Pakistan has been replicated in Central Asia. Countries like Afghanistan are now rebuilding their communities using the same method of power generation. This school in Gulkin is a prime example of what the overall empowerment of these mountain people can achieve using advanced techniques for insulation and earthquake proofing. The construction of the school was funded entirely from the community's own resources. सबसे जो मेन चीज है वो है अवेयरनेस. हमारे जो एकेडियन है और दूसरे एनजीओज हैं उन्होंने हमें शऊर दिया और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ के कम्युनिटी में है लोगों में ये शऊर पैदा हो गया है कि ये काम हमने खुद करना है बजाय दूसरों की तरफ देखने का. सबसे बड़ी चीज और एक और मेन चीज ये है कि लोगों को हम पे एहतमाद है. एहतमाद क्यों है? यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है. उनको पता है कि हमारे जो बंदे काम कर रहे हैं उसमें खुद बुर नहीं है. Is the story true or untrue? Who will tell me? The eagerness towards self-reliance is a testament to the confidence instilled in these people through the recent infrastructure and technology interventions. The success of these projects gives us a glimpse of the true potential in the collective spirit of the people.
and what can be achieved given the right inspiration and assistance. But to bring the mountain communities abreast with the rest of the world, there is still a long way to go.